This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman. I am a professional Ielts instructor, and today we are focusing on Ielts listening part 1 and part 4. And I pray for all of you that may you get 20 out of 20 in part 1 and part 2, because it is possible in part 1 and in part 4. You normally have fill in the blanks. जब हम बात करते हैं ना fill in the blanks की, तो fill in the blanks के अंदर अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो बड़ी जनरल आपसे बातें पूछी जाती है। हो सकता है आपका प्रोफेशन हो सकता है आपसे कोई कलर के बारे में बात की जाए, कोई अमाउंट पूछ लिया जाए, कोई टाइम पूछ लिया जाए, कोई लोकेशन पूछ ली जाए। लेकिन जब हम पार्ट 4 के बारे में बात करते हैं तो याद रखें, चाहे आप आइल्स जनरल के हो, चाहे आप आइल्स एकेडमिक के हो, आपका जो पार्ट 4 होता है वो एक एकेडमिक लेक्चर होता है। वो किसी टॉपिक के ऊपर एग्जामिनर बात कर रहा होगा और आपको उसको सुनना है, और सुनने के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स को फिल अप करना है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि ये आसान होता है, मुश्किल नहीं होता, ये एक हकीकत है। ठीक है। आ, लेकिन जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में आपके पास आज बहुत सारी बातें आ रही है। जैसा मैं बता रहा हूँ समझते रहिएगा, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपनी हर बुक को रिकॉर्ड आपके साथ करूँ, लिसनिंग की भी, ताकि आप लोगों को हर लिसनिंग की बुक की टेक्निक्स भी आपके सामने आए और वोकैबलरी भी आपके सामने आए। कभी भी वो आपसे इस तरह का जो वर्ब होता है वो कभी नहीं बोलेगा। ये जो वर्ब्स जहां से ये स्टार्ट लेता है इसका ही सिनोनिम इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पर क्रिएट है, क्रिएट की जगह वह कोई दूसरा वर्ड बोल सकती है। मेक है, मेक की जगह कोई दूसरा वर्ड बोल सकती है। टेक पार्ट है, उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड कंफर्म ये बोल सकती है और बोलेगी। साथ में ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स होती है, जैसे ये जो एन है, एन एप्पल होता है, एन एग होता है, एन अम्ब्रेला होता है, एन आइसक्रीम होता है, एन आर्टिस्ट होता है, एन अंकल होता है, ये बदल नहीं सकता। ये ग्रामेटिकली एन को रिमूव नहीं कर सकता यहां से। याद रखिए, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री रहती है अपनी जगह पर, नहीं बदलती। ठीक है। यहाँ पर आ लिखा हुआ है तो ये आ अपनी जगह पर लिखा रहेगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिल्ड कार्स एंड ट्रक्स एंड डैश, अगर आप फोकस करें तो आपको कार्स, ट्रक्स एंड डैश नाउन नजर आ रहा है, कार्स, ट्रक्स एंड डैश। तो ये आगे भी अब एक नाउन का ही इस्तेमाल करेगा, और वो नाउन भी जो है वो प्लूरल में होगा लाजमी तौर पर। फिर यहाँ पर वही दोबारा बात आ जाती है। यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, यहाँ बिल्ड। लॉन्गेस्ट को अब वो किस तरह से जो है इस्तेमाल करेगा, ये आपको फोकस करना है कि लॉन्गेस्ट की जगह पर वो कौन सा वर्ड, बिल्ड द लॉन्गेस्ट। फिर यहाँ लिखा हुआ है फिर क्रिएट है। अब यहाँ शॉर्ट है, अब ये शॉर्ट की जगह पर कुछ और बोलेगा। कभी भी डैश से पहले की बात नहीं बोली जाएगी, ये बात जहन में बिठा लीजिए। आपको डैश से पहले अगर आप सुनने बैठे हुए कि वो शॉर्ट बोल देगा, नहीं बोलेगा, क्रिएट बोलेगा, नहीं बोलेगा, बोल दिया आपकी किस्मत। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बोल देगा, आगे चल के स्पेशल सॉफ्टवेयर बोलेगी। यहाँ पर देखिए अब ये वर्ब है, बिल्ड है, ये भी, ये एंड प्रोग्राम, ये भी वर्ब है। तो अब याद रखिए यहाँ जो ये इधर बोलेगा ये भी एक वर्ब ही होगा। फिर आपसे नीचे जाते हैं तो नीचे देखिए आपसे एक लोकेशन पूछी जा रही है, और नीचे प्लेंटी ऑफ डैशेस अवेलेबल। और ये एक मैं आपको जनरल नॉलेज की बात मैं बता देता हूँ। जब हम लोकेशन के ऊपर जाते हैं और उस लोकेशन पर इस तरह की बात होती है डैशेस अवेलेबल, तो जनरल नॉलेज में बिठा लीजिए वो पार्किंग होती है। जब लोकेशन की बात करें और वहां पर ये बात करें इट इज फ्री, डैश इज फ्री, तो वहां पर पार्किंग इज फ्री। डैश इज नॉट फ्री, पार्किंग इज नॉट फ्री। तो पार्किंग का वर्ड अपने जहन में रखिए जब लोकेशन की बात हो। ठीक है। उसके बाद फोटोज मस्ट नॉट बी इन अ डैश और डैश। अब यहां पर देखिए, इधर देखिए, फोटोज डैश, फोटोज। अब यहां पर लिखा हुआ है मस्ट नॉट बी इन आ। तो ये जो प्रेपोजिशन और आर्टिकल आता है ना बेटा, इसको आप बदल नहीं सकते। ये बात अपनी जगह पर ही रहती है।
द कॉस्ट ऑफ 360 फोटो इज, आपको अमाउंट बताना है, ठीक है। बिफोर द ऑर्डर इज द ऑर्डर कंप्लीटेड, ऑर्डर इज सेंट, डैश इज रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है, कुछ रिक्वायर्ड है, डैश इज कंपल्सरी, डैश इज रिक्वायर्ड। फोटोज कैन बी प्लेस इन अ फोल्डर विद द नेम, बाबूजी, अम्मी जान, पापा जानी, है। आप विद, फोटोज कैन बी प्लेस इन अ फोल्डर विद द नेम, क्या नेम, क्या, द डैश एंड कंट्रास्ट। अब जनरल नॉलेज की बात है कि एक तस्वीर का कंट्रास्ट होता है तो दूसरी चीज क्या होती है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जो तस्वीरें फ्रेजाइल होती है, फ्रेजाइल का मतलब समझते हैं, जिनको आप बहुत खस्ता हालत में होती है, एक तो स्कैनिंग होती है मशीन से, दूसरी स्कैनिंग कहाँ से होती है वो बताएगा आपको। इट मे बी पॉसिबल टू रिमूव, रिमूव एन ऑब्जेक्ट और फोटो और चेंज। आज मैंने एक वर्ड, आप लोगों ने भी आज रीडिंग की क्लास में एकेडमिक वालों ने चेंज की जगह पर एक वर्ड पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो एक बात जिसमें चेंज की जगह पर एक वर्ड आया था। जी बेटा, आज 16 चल रही है, अगले हफ्ते 17, फिर 18, फिर वापस 11 पर आ जाऊंगा, ठीक है ना। ऑल्टर, ऑल्टर, चेंज का मतलब ऑल्टर। A photo which is not, a photo which is not correctly in dash cannot be fixed। अब एक जनरल नॉलेज की बात है, एक फोटो विच इज नॉट करेक्टली इन, यहाँ पर क्या आ सकता है, एक तस्वीर का क्या सही ना हो तो उसको हम फिक्स नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फिक्स। ऑर्डर्स कंप्लीट विद इन डैश, विद इन, आपको डेज बताने। सेंड द फोटोज इन अ बॉक्स नॉट इन शॉपर, बॉक्स में भेजिए, किस में ना भेजिए, तो ये आपको सुनकर बताना होगा। ये एक्सप्लेनेशन मैंने सारी दे दी। आप जब होम असाइनमेंट आपका ये है, टेस्ट 3 और 4 आप लोग खुद करें, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। आई एम जस्ट प्लेइंग, वेट फॉर अ व्हाइल। यहाँ से प्ले करते थे आपके लिए। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरप्ट। आपके पास एक पेपर होना चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए, 1 से लेकर 10 तक पार्ट 1, उसके बाद टेस्ट 2 का पार्ट 1, 1 से लेकर 10 तक आप अपने पास कॉपी रेडी कर लीजिए। आपके पास होना चाहिए क्या चीज, हेडफोन्स लगाए हुए तो बहुत अच्छी बात है, आवाज अच्छी आएगी आपको। मैं माइक क्वालिटी के लिए एक दूसरा माइक लगा रहा हूँ ताकि आपको वॉइस क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे कंफर्म कीजिएगा अभी आफ्टर अ फ्यू मिनट्स दैट वॉइस क्वालिटी इज नाउ मच बेटर। ये लगा दिया हमने, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं पोको। The Bluetooth device is connected successfully। ये हमने, जो रशिया से आई है ये लड़की हमारे पास, बस ये बात बोलती है। नेस्ले एवरीडे कड़क चाय, सिर्फ घोले घोले और मजा उठाएं। मुझे कंफर्म कीजिएगा वॉइस क्वालिटी के बारे में। Chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman called Jan phoning a man about their local conservation group. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now listen carefully
and answer questions 1-5. Confirm कीजिएगा मुझे. Hello? Oh, hello. My name is Jan. Are you the right person to talk to about the Buckworth Conservation Group? Yes, I'm Peter. I'm the secretary. Good. I've just moved to this area and I'm interested in getting involved. I was in a similar group where I used to live. Could you tell me something about your activities, please? Of course. A mixture of regular activities and special events. Regular ones is trying to keep the beach free of litter. A few of us spend a couple of hours a month on it, and it's awful how much there is to clear. I wish people would be more responsible and take it home with them. I totally agree. I'd be happy to help with that. Is it okay to take dogs? I'm afraid not, as they're banned from the beach itself. You can take them along the cliffs, though, and children are welcome. Right. We also manage a nature reserve, and there's a lot to do there all year round. For example, because it's a popular place to visit, we spend a lot of time looking after the paths and making sure they're in good condition for walking. I could certainly help with that. Good. And we have a program of creating new habitats there. We've just finished making and installing nesting boxes for birds to use. And next, we're going to work on encouraging insects. They're important for the Ielts 16, published by Cambridge University Press. You will hear and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. There are training to find out about some children's engineering workshops. Yes, we have some time to look at questions 1 to 3. Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Hello, children's engineering workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have 2 daughters who are interested. But the younger one's Olivia. She's 4. Will you take children as young as that? Yes. Our tiny engineers workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. मुझे confirm कीजिएगा अब आवाज की quality. They go really fast too. Okay, well, all this sounds perfect. Before you hear the rest of the conversation, you'll have some time to look at questions 4 to 10. अच्छा, अब मुझे confirm कीजिएगा मेरी आवाज. मैं माइक्स चेंज कर रहा हूँ और ये जो माइक है ये भी एक और. बेटा समझ तो जब आएगा ना, जब पहले आप वॉइस क्वालिटी को ओके करेंगी ना. मैंने भी इससे पहले आपको समझाया था ना. पहले अभी मैं वॉइस क्वालिटी का आपसे पूछ रहा हूँ. Is my voice audible to all of you?
अच्छा, अब मैं प्ले करूंगा, मुझे आप कंफर्म कीजिएगा आवाज कैसी आ रही है। They can go, Right. but they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in. Do you take children as young as that? Yes. बेटा आपको आवाज के अंदर एचडी क्वालिटी जूम के ऊपर नहीं मिलेगी। मेरा जो इससे पहले की बातें थी ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप उन बातों को अपने जहन में रखिए। अगर आपको एचडी क्वालिटी चाहिए तो जब क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हेडफोन लगा के गूगल क्लासरूम से डायरेक्ट आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना मैं आप और आपके पास लिंक्स भी आ जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको बिल्कुल टेस्ट वाली क्वालिटी मिले तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये आप समझदार है आपको। ठीक है ना, तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा भी पुअर होगा तो देन योर क्वालिटी विल गो डाउन। चले, अब मुझे कंफर्म कीजिएगा दोबारा। Questions 1 to 3. Hello, children's engineering workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have two daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes. Our tiny engineers workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg. अब आप ये देखिए, इसने क्रिएट की जगह पर क्या कहा, दे डिजाइन अ स्पेशल कवर, दे डिजाइन अ स्पेशल कवर दैट गोज राउंड। और मैंने आपसे कहा था डैश से पहले जो लिखा हुआ है वो अपनी जगह पर लिखा रहेगा, एन को तब्दील नहीं किया जा सकता, तो वो एज इट इज आपके कानों में जाने वाला है, सुन लीजिएगा। Shop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay, well, बताइए पहले में आपने क्या लिखा, क्रिएट अ कवर दैट गोज राउंड एन। मैंने आपसे कहा है, देखिए ग्रामेटिकली अपने जहन को ग्रामेटिकली थोड़ा सा सोचे। अगर आपने बिल्डिंग लिख दिया तो एन, बिल्डिंग से पहले कभी एन लगा है? सोच समझ के जवाब को भी ऐसा लिखे ना तो कि आपको ग्रामेटिकली भी मैच होता हुआ नजर आए। तो दैट वाज एन एग, एंड द हाईएस्ट टॉलेस्ट की जगह उसने क्या कहा था, हाईएस्ट, और हाईएस्ट की जगह पर आप क्या लिखेंगे, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, और उसने कहा थार, टावर। उसके बाद क्रिएट अ डैश, डिजाइन अ डैश, क्रिएट अ डैश, क्या कहा उसने, कार। अब आपको आगे चलिए, जूनियर इंजीनियर्स। all this sounds perfect. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. अब लिखा हुआ है बिल्ड मॉडल कार्स ट्रक्स, मैंने बताया था नाउन आएगा, तो यहाँ पर भी नाउन आएगा। फिर लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट की जगह वो क्या बोलेगी, बिल्ड द लॉन्गेस्ट डैश। क्रिएट अ शॉर्ट, शॉर्ट की जगह क्या बोलेगी वो, बिल्ड प्रोग्राम। बीच में कौन सा वर्ब आएगा, कौन से डे को यह होगा हेल्ड ऑन, डे बताना है आपको।
लोकेशन बताइए और plenty of dash क्या है? Now listen and answer questions 4 to 10. Now, Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. Presumably, she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So they learn a bit of coding. They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it, but they learn from one another too. Right. And do they have competitions too? Yes. With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. You'd be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human. And they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. So is it the same price as the tiny engineers? It's just a bit more. £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? They used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay, that's better for me actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. Sorry? Fradston. That's Fradston. And that's in Grassford, isn't it? Yes, up past the station. And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. So, would you like to enroll Lydia and Carly now? आखिरी जवाब बताइए क्या था? सबसे आखिर में plenty of dash available. Plenty of पार्किंग, जो हमारा एक जनरल नॉलेज है. उसके बाद उसने एक स्पेलिंग बोली थी. वो स्पेलिंग क्या थी? देखिएगा, यही थी. चल अच्छा, उसके बाद अब एक गलती यहां पर आपने की होगी, लाजमी की होगी. हेल्ड ऑन. जो जवाब लिखा है वो लिखकर भेजना. बिल्कुल डिट्टो सेम लिखना जो तुमने लिखा है. और लोग मुझसे पूछते हैं कि एस और ईएस की मिस्टेक होती है. नहीं, वुमेन डेज कहां से आ गया? मॉर्निंग. तो बेटा मॉर्निंग तो लिखा हुआ है ना, एएम. अकल इस्तेमाल करो, एएम लिखा हुआ है तो मॉर्निंग तो हो गया. तुम्हें डे लिखना था. ऑन मॉर्निंग हो सकता है क्या? लोग मुझसे पूछते हैं कि एस और ईएस लगाने की कहां पर गलती होती है. यहाँ पर होगी, यहाँ 0 मिलेगा तुम्हें अगर तुमने लिख दिया वेडनेसडे. क्यों सर? उसने बोला है ऑन वेडनेसडेज. इट मींस एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 10 AM to 11 AM. आपको एस लगाना था यहाँ. अगर नहीं लगाया तो 0. क्या बात कर रहे हैं सर? ऑन वेडनेसडेज का मतलब कुछ और होता है, ऑन वेडनेसडे का मतलब कुछ और होता है. छोटी छोटी बातें होती है, इनको आपको समझना है. जब भी मैं करवा रहा हूँ हर पार्ट को आपको प्रैक्टिस, ताकि आप उन गलतियों से सीखें. और ये कॉमन है कि डेज के बारे में वो पूछता है, कभी मंडेज आ जाएगा, कभी ट्यूसडेज आ जाएगा. तो इस बात को जहन में रखो. अच्छा, ऊपर चलिए. नंबर 7, आपको वर्ब लिखना था. एक बिल्ड था, प्रोग्राम था, बीच में एक वर्ब आना था. क्या लिखा वो वर्ब?
किसी ने लिखा एक्यूरेट, तो एक्यूरेट था या डेकोरेट था? अब देखे कानों में चला गया, एक्यूरेट था, डेकोरेट, ठीक है ना। अच्छा, डेकोरेट से ऊपर अब देखो शॉर्ट को उसने कैसे बोला, शॉर्ट को, शॉर्ट को उसने बोला 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। अब उसने कहा क्रिएट 5 मिनट्स मूवी, क्रिएट 5 मिनट्स मूवी। फिर उसने लॉन्गेस्ट बिल्ड का वर्ड इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन लॉन्गेस्ट की जगह पर उसने क्या बोला था, हाईएस्ट बोला था, ब्रिज, एंड द आंसर इज ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज। कार्स, ट्रक्स और एक वर्ड उसने नाउन बोला था जो प्लॉरल में था, अगर आपके कानों में वो चला गया हो, एनिमल्स। ये तो अभी तक सारा प्लेजरिज्म था, मैंने समझाया हुआ था, अगला भी मैंने समझाया हुआ है, लेकिन बीच में अब मैं कहीं इंटरप्ट नहीं करूंगा। 6 मिनट तक आप लोग सुनेंगे और अपना फिर स्कोर बताइएगा कि आपने 10 में से क्या स्कोर किया। चलिए। Okay. The test is in 4 parts. Oh, hi. Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Okay. Hello, Picture Rep. Can I help you? Oh, hi. I saw your advertisement about copying pictures to disk, and I'd like a bit more information about what you do. Sure. What would you like to know? Well, I've got a box full of old family photos that's been up in the attic for years. Some of them must be 50 or 60 years old, and I'd like to get them converted to digital format. Sure, we can do that for you. Right. And what about size? The photos are all sorts of sizes. Are there any restrictions? Well, the maximum size of photo we can do with our normal service is 30 centimetres, and each picture must be at least 4 centimetres. That's the minimum we can cope with. Well, that should be fine. And some of them are in a frame. Should I take them out before I send them? Yes, please. We can't copy them otherwise. So the photos must all be separate. They mustn't be stuck into an album. Okay, that's not a problem. So, can you give me an idea of how much this will cost? Got about 360 photos, I think. We charge £195 for 300 to 400 photos for the basic service. Okay, and does that include the disc? Yes, 1 disc, but you can get extra ones for £5 each. That's good. So, do I need to pay when I send you the photos? No, we won't need anything until we've actually copied the pictures. Then we'll let you know how much it is, and once we've received the payments, we'll send the parcel off to you. Right. When you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Is there anything else you'd like to ask about our services? Yes, I've roughly sorted out the photos in groups according to what they're about. So, can you put them in those groups when you copy them? Sure, we'll save each group in a different folder on the disk, and if you like, you can suggest a name for each folder. I could have one called grandparents, for instance. Clean. And do you do anything besides scan the photos? Like, can you make any improvements? In the standard service, each photo is checked, and we can sometimes touch up the colour a bit or improve the contrast. That can make a big difference. Okay, and some of the photos are actually quite fragile. They won't get damaged in the process, will they?
Oh, if any look particularly fragile, we'd do them by hand. We do realise how precious these old photos can be. And another thing is we can make changes to a photo if you want. So if you want to remove an object from a photo or maybe alter the background, we can do that. Really? I might be interested in that. I'll have a look through the photos and see. Oh, and talking of fixing photos, I've got a few that aren't properly in focus. Can you do anything to make that better? No, I'm afraid that's one thing we can't do. Okay. Any other information I can give you? How long will it all take? We aim to get the copying done in 10 days. Fine. Right, well, I'll get the photos packed up in a box and post them off to you. Right. If you've got a strong cardboard box, that's best. We've found that plastic ones sometimes break in the post. Okay. Right, thanks for your help. Bye. Bye. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers to part 1. मोबाइल घुमा लीजिए और अपने आंसर्स चेक कीजिए। 10 आउट ऑफ 10 किसके आए? सेवन, 9, 7, 9। जिनका आज डे 1 है वो भी अपनी मेंशन कर दीजिएगा, डे 1। और अब मेरा स्कोर ये है, भले से आपका 2 स्कोर आया हो जरूर लिखें। 8, 9, 4, 5, 6, 4, 5, 6। ये मैं समझिए 4, 5, 6 वालों का पहला दिन है। जिनका पहला दिन है वो 10, बिकॉज वी हैड डन दिस बिफोर। जो पुराने वो तो कर चुके होंगे पार्ट 1 पूरा। चलिए 10 आउट ऑफ 10। 10, माशाल्लाह। नहीं बेटा, आपकी अपनी मेहनत है, आप मेहनत आप करेंगी, हम क्या कर रहे हैं, हम तो बैठे हुए बस। मेहनत आप कर रही है। चलिए अच्छा, अब बुक 16 का आपके सामने टेस्ट 1 आ गया। अच्छा, इस बात को लेकर परेशान मत हुआ करें कि यार वर्ड बहुत मुश्किल आ गया। आपको फिर मैं कह रहा हूं, आप वर्ड को इग्नोर कर दें और आप इट्स स्टिल रेलेवेंट टुडे बिकॉज ऑफ इट्स डैश अपील। आपको सिर्फ इसको ग्रामेटिकली फॉलो करना है कि इट्स डैश अपील। ये पार्ट 4 के अंदर भी फिल इन द ब्लैंक्स होती है और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको कोई दूसरी टेक्निक अलाउ नहीं कॉपी करनी, बस वो ब्लैंक से पहले वाले वर्ड को चेंज करेगा इंटेंडेड फॉर। बट द डैश पीपल मेक इन रिस्पॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड if someone has different view on experience which other would consider as what? George organized a dash ideas on treatment for thinking on obstacles as requires a lot of। इन बातों को जहन में रखिए, आंखों में रखिए। एक स्टाइल बता रहा हूं, पार्ट 4 के अंदर ऐसा देखा गया है कि जब आप यहाँ पे, तो खैर डैश आखिर में ही है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो आखिर में जाकर बोलेगा। वो डैश वाली बात पहले बोल सकता है और उसके बाद ये वाली बातों को लेकर आएगा। अब यहाँ पर तो ये बीच में ही है, ये भी आखिर में है, ये बीच में, बीच में, बीच में, आखिर में, आखिर में। तो जो आखिर की बात है वो पहले आ सकती है।
जो आखिर की बात है वो पहले आ सकती है। ये लीजिए, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ बेटा आपके लिए। अब आ गई आपके पास स्क्रीन। चलिए इसको एक्सपीरियंस कीजिए पहले आप, मैं आपके साथ साथ चलूंगा। 31, 32, 33। अच्छा ये बीच में कहीं रुकेगा नहीं, लेकिन मैं रोक लूंगा इसको। हम फॉलो करते हैं इसको, चलिए। First, you have some time to look at questions 31 to 40. बस ये वो टाइम है कि आप पूरा 31 to 40 देख लें, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है। Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Ancient philosophy is not just about talking or lecturing or even reading long, dense books. In fact, it is something people have used throughout history to solve their problems, achieve their greatest triumphs. Specifically, referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. अब इसने कहा देयरफॉर मोस्ट अपीलिंग। अब इसने देखिए जो बात अभी आप इंतजार करने बैठे थे कि ये अपील के साथ कुछ बोलेगा या अपील से पहले या अपील के बाद, ये इसने होशियारी की, इसने वो वर्ड पहले बोल दिया। बिकॉज ऑफ इट्स डैश अपील। दोबारा सुनिएगा, इसके अंदर थोड़ी सी ये होशियारी करता है। ये होशियारी जो समझ जाएगा वो सबसे जबरदस्त है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए Specifically, referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies, for the most appealing. Stoicism was founded in ancient Greece by Zeno of. आपने देखा इसने फिर अपील बाद में बोला, और जो असल वर्ड था वो पहले बोल के निकल गया। अनमोल ने पकड़ लिया वो वर्ड। दोबारा सुने। To solve their problems, to achieve their greatest triumphs. Specifically, referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies, for the most appealing. Practical, practical, because of its practical appeal। आगे चलिए। Stoicism was founded in ancient Greece by Zeno of Citium in the early 3rd century BC, but was practiced by the likes of Epictetus, Cato, Seneca, and Marcus Aurelius. Amazingly, we still have access to these ideas, despite the fact that the most famous Stoics never wrote anything down for publication. Cato definitely didn't. Marcus Aurelius never intended his meditations to be anything but personal. Seneca's letters were, well, letters, and Epictetus's thoughts come to us by way of a note-taking student. Stoic principles were based on the idea that its followers could have an unshakable happiness in this practice by the likes of Epictetus, Cato, Seneca, and Marcus Aurelius, which in my opinion is the most practical of all philosophies, for the most appealing. Stoicism was founded in ancient Greece by Zeno of Citium in the early 3rd century BC, but was practiced by the likes of Epictetus, Cato,
Seneca, and Marcus Aurelius. Amazingly, we still have access to these ideas. Just अच्छा, अब देखिए इसने कहा सरप्राइजिंगली और इसने बोला अमेजिंगली. We still have access despite not being intended for. by the fact that the most famous Stoics never wrote anything down for publication. Cato definitely. Despite not being intended for का वर्ड आपको टकरा गया है, दोबारा सुन लें. Marcus Aurelius. Amazingly, we still have access to these ideas, despite the fact that the most famous Stoics never wrote anything down for publication. Cato definitely. आप मेरी बात मान लें कि जो डैश से पहले prepositions होते हैं उनको बदलना मुश्किल होता है, तो उसने for का वर्ड अपनी जगह पर रखा. अगर आपके कान बिल्कुल साफ चल रहे, एचडी क्वालिटी आ रही है आपके पास, आप लाजमी तौर पे पकड़ लेंगे. अभी अभी मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूं, तो मेरी बातें आपके लिए मेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप इस चीज को जरूर ट्राई कीजिएगा क्लास के फौरन बाद कि सर ने जो बातें बताई है मैं उसको क्रॉस चेक करता हूँ. यहाँ फॉर लिखा हुआ है, अब मैं हेडफोन लगा के इसको एचडी क्वालिटी में सुनता हूँ जो लिंक सर ने फॉरवर्ड किया उससे. ठीक है बेटा, चले आगे. Definitely didn't. Marcus Aurelius never intended his meditations to be anything but personal. Seneca's letters were, well, letters, and Epictetus's thoughts come to us by way of a note-taking students. Stoic principles were based on the idea that its followers could have an unshakable happiness in this life, and the key to achieving this was virtue. The road to virtue. आप देखिए अभी ये आ गया वर्चुअस लाइफ. अभी इस प्रिंसिपल्स के ऊपर अब ये इमोशंस अब आएगा. उसके बाद controlled by the dash people make in response can be controlled. Who in turn lay in understanding that destructive emotions like anger and jealousy are under our conscious control. They don't have to control us because we can learn to control them. In the words of Epictetus, external events I cannot control. Choices I make with regard to them, I do control. Learn to control them. In the words of Epictetus, external events I cannot control. Choices I make with regard to them, I do control. Learn to control them. In the words of Epictetus, external events I cannot control. Choices I make with regard to them, I do control. ये एक वर्ड च्यू कर रहे हैं यहाँ पर, वो वर्ड च्यू करिए. Learn to control them. In the words of Epictetus, external events I cannot control. Choices I make with regard to them, I do control. वो ये एक वर्ड जो आंसर है उसको वो च्यू कर रहा है. मैं इसको यहाँ Ancient philosophy is not just about talking or lecturing or even reading long, dense books. Empiricism was founded in ancient Greece by Zeno of Citium in the early 3rd century BC, but was practiced by the likes of Epictetus, Cato, Seneca, and Marcus Aurelius. Amazingly, we still have access to these ideas, despite the fact that the most famous Stoics never wrote anything down for publication. Cato definitely didn't. Marcus Aurelius never intended his meditations to be anything but personal. His letters were, well, letters, and Epictetus's thoughts come to us by way of a note-taking student. Stoic principles were based on the idea that its followers
could have an unshakable happiness in this life, and the key to achieving this was virtue. The road to virtue, in turn, lay in understanding that destructive emotions like anger and jealousy are under our conscious control. They don't have control us, because we can learn to control them. In the words of Epictetus, external events I cannot control, but the choices I make with regard to them, But the dash people make in response, but the dash. Very good. us, because we can learn to control them. In the words of Epictetus, external events I cannot control, but the choices I make with regard to them, But the even, but भी बोल रहा है, दा भी बोल रहा है, इसके बाद जो वर्ड बोल रहा है बहुत शॉर्ट है, इसलिए वो कुछ जगहों पे क्यों हुआ हुआ महसूस हो रहा है. But the choices equal में choices की स्पेलिंग बेटा, अब ये इसको भी choices की स्पेलिंग. चलो आगे. we control. The modern day philosopher and writer Nassim Nicholas Taleb defines a Stoic as someone who has a different perspective on experiences which most of us would see as wholly negative. A Stoic transforms fear into caution, pain into transformation, mistakes into initiation, and desire into undertaking. Transforms fear into caution, pain into transformation. The modern-day philosopher and writer, as of Epictetus, external events I cannot control, but the choices I make with regard to them, I do control. The modern-day philosopher and writer, Nassim Nicholas Taleb, defines a Stoic as someone who has a different perspective on experiences which most of us would see as wholly negative. Consider as wholly as, consider as negative. George Washington organized Stoic transforms fear into caution, pain into transformation, mistakes into initiation, and desire into undertaking. Consider as negative, not human beings. Using this definition as a model, we can see that throughout the centuries, Stoicism has been practiced in more recent history by kings, presidents, artists, writers, and entrepreneurs. The founding fathers of the United States were inspired by the philosophy. George Washington was introduced to Stoicism by his neighbors at age 17, and later put on a play based on the life of Cato to inspire his men. Organize the, उसने क्या organize किया later? Organize very good. Organize philosophy. George Washington was introduced to Stoicism by his neighbors at age 17, and later put on a play based on the life of Cato. He organized a play. Organized the play. To inspire his men. Thomas Jefferson kept a copy of Seneca beside his bed. Writers and artists have also been inspired by the Stoics. Eugene Delacroix, the renowned French Romantic artist, known best for his painting Liberty Leading the People, was an ardent Play, P-L-A-Y, play. Play. अब Adam Smith का इंतजार करें. Stoic, referring to it as his consoling religion. The economist Adam Smith's theories on capitalism was ideas on, theory on, ideas on,
Adam Smith, an economist. Ideas on दोबारा सुने. Significantly influenced, was an ardent Stoic, referring to it as his consoling religion. The economist Adam Smith's theories on capitalism were significantly influenced by the Stoicism that he studied as a school. Capitalism. The बाद बीच में important अगर A teacher who translated Marcus Aurelius's works. Today's political leaders are no different, with many finding their inspiration from the ancient texts. Former US President Bill Clinton rereads Marcus Aurelius every single year. And many have compared former President Obama's calm leadership style to that of Cato. Wen Jiabao, the former Prime Minister of China, claims that Meditations is one of 2 books he travels with, and that he has read it more than 100 times over the course of his life. Stoicism had a profound influence on Albert Ellis, who invented cognitive behavior therapy, which is used to help people manage their problems by changing the way that they think and behave. It's most commonly used to treat depression. The treatment for depression की spelling, capitalism की spelling, depression, capitalism, capitalism. आगे चलिए. idea is that we can take control of our lives by challenging the irrational beliefs that create our faulty thinking, symptoms, and behaviors by using logic instead. Stoicism has also become popular in the world of business. Stoic principles can build the resilience and state of mind required to overcome setbacks, because Stoics teach turning obstacles into opportunity, a lesson every business entrepreneur needs to learn. I would argue that studying Stoicism is as relevant today as it was 2,000 years ago, thanks to its brilliant insights into how to lead a good life. At the very root of the thinking, there is a very simple way of living. Control what you can, accept what you can't. This is not as easy as it sounds, and will require considerable practice. It can take a lifetime to master. Yes. It requires a lot of number 40. It requires a lot of practice. The business people benefit from that by identifying obstacles as barriers, opportunity, very good, and thinking on base their thinking on perception on law. जिनका आज पहला दिन है वो पार्ट 1 को बेटा पहले फॉलो करेंगे. जो पार्ट 1 फॉलो कर चुके हैं वो पार्ट 4 पर आ जाइए. जो पार्ट 1 और पार्ट 4 को फॉलो कर चुके हैं वो पार्ट 2 पर आ जाइए. कल का जो सेशन होगा वो मैथ के ऊपर करवा रहा हूँ स्पेशली, तो पार्ट 2 को आप फॉलो कीजिएगा जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 4 कर सकते हैं. लेकिन जिन्होंने अभी पार्ट 1 और पार्ट 4 को हाथ ही लगाया है वो अभी सिर्फ पार्ट 1 को फॉलो करेंगे और फिर आगे. ठीक है ना. मैं पार्ट 1 के लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो उसको फॉलो कीजिएगा. कल इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 में मिलेगा.